नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम जगदेश कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है जगदेश कुमार जी आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे Okay. दर्शकों को बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अ, हम जगदेश कुमार जी के बारे में बात करें तो जेएनयू के वाइस चांसलर का पद लेने से पहले वो आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रही हैं और आईआईटी मद्रास से आपने अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जब जनवरी 2016 में उन्होंने जेएनयू के वाइस चांसलर का कार्यभार संभाला, तब उनका क्या फोकस था, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था और क्या उस ऑब्जेक्ट को करने में सफल हो पाए? जेएनयू के जो एकेडमिक कल्चर है या फिर जेएनयू का जो फंक्शनिंग है, उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स आए एम जगदेश कुमार जी के आने के बाद? सर शुरू करना चाहूँगी मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि आप पिछले 5 साल की तरफ अगर मुड़ के देखें, तो कैसे समराइज़ करना चाहेंगे आप बतौर जेएनयू के वाइस चांसलर अपनी जर्नी को? देखिए, if you look at the situation in the country, the जी, corona pandemic, for example, the way we have managed the corona pandemic, it is possible only because we have advanced facilities and advanced capabilities in developing the vaccines in our country. But in many other areas, we need to develop our own indigenous technologies. We need to develop our own products so that ultimately India will become a self-reliant country. And higher educational institutes play a very, very important role. Universities such as JNU and other institutes such as IITs, they play an immense role. So if you look from that perspective, JNU is a university which is well known in social sciences, languages, international relations, and also sciences. So when I joined here, my first focus was to see how to make use of these existing strengths and make जी, this university a very, very comprehensive university so that we can turn our basic research that we are doing in our university into applications and products so that they can be used by the people to overcome some of the challenges that we are facing today. And that is the reason why from the time I have joined here, we focused on achieving academic excellence. And this has been very well shown during the last few years because JNU has been rated as one of the best universities in the NIRF rankings. And we also got the highest A++ grade in the NAC assessment. And also, if you look at the global rankings in some of the subjects, we are among the top 100 or 200 universities in the world. So my objective of coming here is to strengthen the university further and to make sure that we move from basic research to applied research. And to a larger extent, we have succeeded during the last 5 years. But then any work in a university is always work in progress. It is nothing like you have reached the destination because newer challenges will keep coming up. And that is what we are doing in the university. We are expanding the academic programs in anticipation of the challenges that will come in future and strengthening the research and innovation activities in the university.